This is our 17th lecture. This is 17th lecture. In this lecture, we will do fiscal policy. Already we have done. I think already we have done. This is slide number 8. In this we have done effect of fiscal policy, effect of expansionary fiscal policy under floating exchange rate on Mundell Flemming Model, equilibrium exchange rate and income. Effect of expansionary fiscal policy under floating exchange rate on equilibrium exchange rate and income. We have done this thing. Expansionary fiscal policy का मंडल फ्लेमिंग मॉडल में इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पे और इनकम लेवल पे क्या इफेक्ट होता है. वी हैव डन दिस थिंग. Exchange rate is on vertical axis, income is on horizontal axis. As IS curve shift due to higher government expenditure or decreasing government taxes. In both cases, IS curve shift upward. Firstly, income level rises from Y1 to Y2, from here to here. But higher income level increases interest rate in the local markets, and higher interest rate attracts. Higher interest rate क्या करता है? Foreign investor को कॉल करता है. Foreign investors then buy more local currency. In this way, Pak rupee values increases, exchange rate increases. When exchange rate increases, this higher exchange rate, this higher exchange rates will decrease income level from Y to Y1. That is a regional output level, regional income level. Regional income level. So Y2 move back to Y1 due to higher exchange rate. So here we can say that higher exchange rates crowds out. Crowds out means decreases net exports. Decreasing net exports causes to decrease output income level from Y to Y1. So this crowding out is caused by higher exchange rate. This crowding out is discussed in the small open economy. So yesterday we have done all things, that is, at any given level of exchange rates, expansionary fiscal policy causes IS curve shift, right, in the form of red colored IS curve, where income level increases from here to here, Y2. Higher income level causes to increase local interest rate
due to higher money demands, ये बुक में एवरीथिंग इज रिटन। इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ेगी। आप चाहेंगे क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी डेफिनेटली आपके पास ज्यादा मनी डिमांड होगी और आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बाय करेगी। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ जाती है। कंजम्पशन के बढ़ने से इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मोर मोर मोर। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे देन दे विल बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिमांड के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब लोकल इंटरेस्ट रेट, जिसको हमने ज्यूम किया था कि वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के इक्वल है, अब वो बढ़ जाएगा ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाएगा लोकल इंटरेस्ट रेट, फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए वो फॉरेन डॉलर से वो पाक रुपी बाय करेगा। जब डॉलर देकर पाक रुपी बाय करेगा तो पाक रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब पाक रुपी की वैल्यू बढ़ेगी देन एक्सचेंज रेट गोज अप। एज एक्सचेंज रेट गोज अप देन नेट एक्सपोर्ट डिक्रीजेस। तो हायर एक्सचेंज रेट crowds out net exports, which decreases income level from Y2 to Y1. So it shifts IS curve to the right, and where exchange rate increases, that is positive sign mean increases, and output level no change, and we find no change in output level. But this is the case of fiscal policy. Two types of, yesterday we have discussed two types of policies which are followed by the government to stabilize the economy. First policy is fiscal policy. Second policy is monetary policy. Then each policy has two forms, two types, two forms. Fiscal policy has two forms. First one is expansionary fiscal policy. This one you have done. Second one is the contractory fiscal policy. Which one we call fiscal contraction. That is also called tight fiscal policy. In case of tight fiscal policy, opposite case of fiscal policy, expansive fiscal policy, is contractory fiscal policy. Contractory fiscal policy is held when government decreases its expenditure. जब government अपने expenditure कम करे या government taxation बढ़ा दे, दोनों का impact same होगा। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, कम कर देगी, इन केस ऑफ कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इन केस ऑफ फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन, जी डिक्रीज हो जाएगा। जी का डिक्रीज होने से पूरा राइट साइड डिक्रीज हो जाएगी। आईएस कर्व शिफ्ट डाउन, इनकम लेवल डिक्रीजेस। आईएस कर्व को डाउन शिफ्ट करेंगे, इनकम लेवल क्या हो जाएगा, कम ओवर द टाइम। अब क्वेश्चन हमारा ये है, इनकम लेवल क्यों कम होगा? जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कम होने का इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। गवर्नमेंट जस्ट वही प्रोजेक्ट वर्क करते हैं जो ऑलरेडी अप्रूव हो, फर्दर प्रोजेक्ट वर्क नहीं करते। एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाता है, लेबर को वेज नहीं मिलती, लेबर की इनकम कम हो जाती है। लेबर आर द की कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। जब लेबर की इनकम कम हो जाती है, देन ओवरऑल इनकम लेवल कम हो जाता है। सो दिस इज योर असाइनमेंट, यू विल डू बाय सेल्फ। सो सिमिलरली, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, टैक्स बढ़ाने से इफेक्ट क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगी, लोगों की इनकम लेवल कम हो जाएगा। जब गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगा देगी, डेफिनेटली इनकम लेवल कम होगा। Then IS curve shift down,
आईएस कर्व शिफ्ट होने का इम्पैक्ट क्या होगा, डाउन शिफ्ट होने का इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस and output level is unchanged like this. This will be the part of your assignment. I will write down. Second question होगा, last हम already भी कुछ discuss कर चुके हैं. Now, so same lessons about the fiscal policy, lessons from expansionary fiscal policy under floating exchange. What is the lesson? In small open economy with perfect capital mobility, which are the assumption of Mundell Flemming Model. The first assumption is small open economy. Second assumption is perfect capital mobility. In both cases, fiscal policy would not affect income level. In both cases, fiscal policy would not affect output. But fiscal policy in closed economy, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोकल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, then fiscal policy will crowd out private investment by higher interest rates. In small open economy, fiscal policy will crowd out net exports by increasing exchange rates. We have done this thing in the previous slides. Crowding out concept. Crowding out of a concept is much important in economics, mostly discussed by the economists. That is very easy. Now you can do by yourself. I will give you one assignment regarding this. The next part, that is very interesting. We have done impact of fiscal policy under floating exchange rate on equilibrium exchange rate and income level. In Mundell Flemming model, we have done this thing. Now we are going to work with the impact of monetary policy under floating exchange rate on equilibrium exchange rate and income level under Mundell Flemming model. The same thing, IS curve equation is here, money's LM curve equation is here. Money, IS curve equation is here, money market equation, LM curve equation is here. Okay, so here, in case of monetary policy under floating exchange rates, two forms already we have done with fiscal policy. First form is expansionary monetary policy. Second one is tight monetary policy. More tools of monetary policies are already we have discussed, but here only one tool. So here is, first one is money supply increase, that is expansionary monetary policy. Money supply decrease, that is a form of contractionary or tight monetary policy. So in case of monetary policy, we will discuss the impact of expansionary monetary policy under floating exchange rates on equilibrium exchange rate and income level under Mundell Flemming model. Okay, so let's come here. An increase in money supply. As money supply increases,
It means a large amount of money is available in the economy. Then इसका impact क्या होगा? Money supply increase होने का. An increase in money supply shift LM curve right in red color you can see. The first one is the blue colored LM curve, that is old LM curve, LM1, and IS curve in the blue colored. So an increase in money supply shift LM curve right. That is the point. As a result, as LM curve shift right, then output level will increase. Output level must rise to restore equilibrium in money markets. G. So you can see here, as LM curve shift right, the new equilibrium under Mundell Flemming model is achieved at this point, where we find output level has increased. Output level is increased. Okay. So it will cause, as income level rises, as money supply increases, now you move the same mechanism. Mनी सप्लाई इंक्रीज होने का इम्पैक्ट क्या होगा? मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएगा. Because of as money supply increases, money demand due to higher money supply, interest rate decreases. Interest rate decreases. As interest rate decreases, then people will prefer to hold more money than deposit in bank. जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सभी लोग यही प्रेफर करेंगे कि वो अपने पास पैसा होल्ड कर ले एज कंपेयर टू इन्वेस्ट कर ले. इंटरेस्ट पेमेंट को प्रेफर नहीं करेंगे बल्कि वो अपने पास पैसा होल्ड कर ले. जब इंटरेस्ट रेट कम होगा देन लोकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, फॉरेन मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, then local investor foreign market में invest करेगा and they will demand foreign currency. जब foreign currency की डिमांड बढ़ जाएगी as compared to पाक करेंसी, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा. जब एक्सचेंज रेट कम होगा then lower exchange rate will increase net exports. Ultimately, higher net exports will cause to increase output level, income level from point A to B movement. So we find the movement from point A to point B, where new LM curve, red color LM curve is intersect to old IS curve. At new equilibrium, the economy is on new equilibrium under Mundell Flemming model, where exchange rate has been decreased and
output level increases. Output level increases. This is the point monetary policy. This is the point of monetary policy under floating exchange rate. When we assume expansionary monetary policy, this is the case of expansionary monetary policy. The other case, that is your assignment, is the case of tight monetary policy. That is the case of contractionary monetary policy. That is also so easy. Contractionary monetary policy में क्या होगा बेटा? A decrease in money supply. Money supply कम हो जाएगी. मनी सप्लाई जब मार्केट में कम हो जाएगी, गवर्नमेंट प्रिंट मनी करती है. प्रिंट क्यों मनी करती है गवर्नमेंट? रीजन क्या है गवर्नमेंट की प्रिंटिंग मनी करने की? ताकि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को असिस्ट कर सके. ओके, बट इन केस ऑफ a decrease in money supply, in decrease in M mean जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, LM कब कहाँ शिफ्ट होगा? राइट नहीं शिफ्ट होगा बल्कि लेफ्ट शिफ्ट होगा. जब LM कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मनी सप्लाई के कम होने का? फर्स्टली आप देखें पुराने डायग्राम में LM कर्व डेरिवेशन में, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. हायर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा? फॉर हायर इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, देन लोकल इंटरेस्ट रेट विल बी ग्रेटर देन द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट. अब फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे. जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, देन वो क्या करेंगे? पाक करेंसी डिमांड करेंगे. तो डॉलर में तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे तो पाक करेंसी में उनको एसेट बाय करना पड़ेगा. मशीनरी रुपी से बाय होती है, यहाँ पे डॉलर से बाय नहीं होती. कॉमन बात करें, डॉलर से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन यही होती है कि लोकल करेंसी में परचेज करेंगे. जब लोकल करेंसी के वो डिमांड करेंगे, लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा. एक्सचेंज रेट के बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा? इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी. सॉरी, एक्सचेंज रेट बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी. Then higher exchange rate यहाँ भी क्या करेगा? crowding out effect. Higher exchange rate will crowd out net export and causes to increase, to decrease. So no. In this case, in case of tight monetary, it will causes to decrease income level. Causes to decrease income level. Okay. तो ये बेटा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी केस है. दोबारा से आप इसको रिवाइज कर लें. इन केस ऑफ ए डिक्रीज इन मनी सप्लाई, LM कर्व शिफ्ट लेफ्ट नॉट राइट. उसका इफेक्ट क्या होगा? LM कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा आपका? नेगेटिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिवली बढ़ेगा. कम नहीं होगा, ज्यादा होगा. और आउटपुट लेवल बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा. We have done this monetary policy under Mundell Flemming Model. Okay. So these are two cases. I will give you assignments about these cases. In detail, we have done this. Okay. So these are two cases. First one is expansionary and tight fiscal policy under floating exchange rate. Second case is expansionary or tight monetary policy under floating exchange rate in the
Mundell Flemming model. We have done. Now we will move toward fixed exchange rate. This thing we will do in the next class. So now I am going to close our lecture. So we will do other things, continue other next in the next class. If you have any question, you can ask your question. Now I am going to close the